Hi everyone. So today we are going to discuss about the topic defects of vision, which is in your chapter Human Eye and the Colorful World for the class. Okay, so it's an important topic, like considering the fact that this has been asked in the previous exams. Okay, so without any further delay, let's start the topic. So as you know that when we talk about defects of vision, so basically what we are saying that the image is not clearly formed. Okay, you cannot see the image of an object clearly. Let's suppose I have kept the object at some distance and the person cannot see that object clearly. That means there is some defect in his vision. Okay, he cannot see the things properly. Now, what's the reason behind that? It's very simple. If the image is formed on the retina, the image will be clear. Okay, the person can see the object very clearly. Clear? But when this image is not formed on the retina, it can be formed somewhere else. It can be formed in front of retina or it can be formed behind the retina. Okay, so in that case, the image is not clearly formed. So that's what we call it's the defect of vision. Okay, so there are two types of defects of vision. There are two defects of vision which you have to study in detail. Okay, and the others, presbyopia, astigmatism, cataract. Okay, these are also defects of vision. उनको आपको अच्छे से उतना नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है. आपको myopia और hypermetropia जो है, you have to study that in detail. Okay, so without any further delay, let's start this. So first defect which we are going to study today is the myopia. Okay, now how you will write this in exam. Okay, one the way of writing is that you write in the paragraphs. Okay, paragraphs mein likho, and that's also fine, but what I personally like is that I write in the bullet points. Okay, so let's study by that. So myopia, the first thing which you're going to write is about this myopia. This defect is also called, it is also called nearsightedness. Okay, nearsightedness. Okay, so what happens in this defect is that a person can see the nearby objects clearly. Okay, जो चीजें जो ऑब्जेक्ट्स एक पर्सन के करीब होंगे, नजदीक होंगे, उनको वो अच्छे से दिखेंगे, वो वाले ऑब्जेक्ट्स. बट दिस पर्सन कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. जो चीजें दूर है, वो चीजें जो है इंसान अच्छे से नहीं देख पाएगा. Okay, so in this you have two concepts. You have the near point and you have the far point. Okay, what is the near point? Near point is the nearest point at which I can see the objects clearly. ठीक है, एक ह्यूमन सबसे नजदीक वाला डिस्टेंस जहां से वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएगा, वो है उसका नियर पॉइंट. ओके, एंड इन केस ऑफ ह्यूमंस दिस नियर पॉइंट इज द 25 सेंटीमीटर्स. ओके, इन 25 सेंटीमीटर्स के आगे अगर आपने कोई चीज रखी, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, तो वो आपको अच्छे से नहीं दिखेगी. Okay, so the least distance at which the objects can be seen clearly is the 25 centimeters. Okay, and this is called the near point. Similarly, the farthest point at which the objects can be seen clearly. सबसे दूर चीज, सबसे दूर वाले डिस्टेंस जहां से आप ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाओगे, that is called the far point. Okay, और नॉर्मल आई में वो फार पॉइंट है इन्फिनिटी. इट इज इन्फिनिटी. आप सोचिए ना, हम नहीं देख पाते हैं, डोंट वी सी स्टार्स, डोंट वी सी सन. दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, बट स्टिल वी आर एबल टू सी देम. सो फार पॉइंट एक नॉर्मल आई के लिए है इन्फिनिटी. क्लियर? अब देखिए मायोपिया में हमने क्या डिस्कस किया, दैट आप नजदीक वाली चीजें अच्छे से देख पाएंगे, दूर वाली चीजें अच्छे से नहीं देख पाएंगे. ओके, सो लेट्स राइट दैट पॉइंट. ओके, इन दिस डिफेक्ट a person can see nearby objects clearly. Nearby objects clearly, but cannot see far objects. Okay, cannot see far objects clearly. दूर की चीजें वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे. Okay, अब what happens in this is that, as I said, that defect तभी आएगा
जब इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनेगी। When the image will not be formed on the retina, then there will be the defect. Okay. और इस वाले defect में myopia में the image is formed in front of retina. Okay. Image is formed in front of retina. Clear? That's nice. तो myopia में image जो है वो retina से पहले बनती है. Okay. Now this is the description. आपने ये describe किया, एक 3 bullet points में आपने describe किया कि myopia है क्या. Okay. इसके बाद आप डिस्कस क्या करेंगे, इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे और इसका करेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लाइक देयर आर न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, दैट इज इस वाले डिफेक्ट में कौन सा पॉइंट चेंज होता है, इज इट द नियर पॉइंट विच इज चेंजिंग और इज इट द फार पॉइंट विच इज चेंजिंग, सो यू नीड टू नो अबाउट दैट। नाउ क्लियरली नो, पूरी तरीके से सोचो इस पे। ओके, फोकस। व्हाट वी आर राइटिंग इज दैट इन मायोपिया यू कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट दूर की चीजें अच्छे से नहीं देख, दूर की चीजें अच्छे से नहीं देख पाओगे। ओके, उसका मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स दैट the near point does not change, it remains as 25 centimeters. Okay, because you can see nearby objects clearly, but you cannot see far objects clearly. So that means the far point changes here. Okay, so the point number 4 here is far point change. Okay, far point change. And obviously, if the far point for the normal eye is infinity, so for this it will be less than infinity because there is nothing more than infinity. Okay, far point change and is less than infinity. Okay, that's nice. So these are the 4 points in which you have described about this defect called myopia. So now, then you will discuss about the causes. Okay, let us write causes. What are the causes of this? So see, to describe this, let us make the diagram. Okay, let's keep this. Okay, now the rays are coming from the infinity like this. So they will be converged in front of retina. Okay, image is formed in front of retina, rays converge in front of retina. Okay, so what does this mean? There can be two possible causes for this. Cause number one, the size of the eyeball has increased. Okay, let's suppose अगर पहले size था eyeball का इतना, okay, तो image was formed on the retina, so कोई problem नहीं थी। लेकिन अब अगर size जो है इसका बढ़ गया, the size of the eyeball has increased. Okay, size of the eyeball has increased. Okay, the size of the eyeball has increased. So उसकी वजह से क्या हुआ, रेटिना जो है वो पीछे चला गया और इमेज जो है उसके आगे बन रही है. So cause number one is that the size of the eyeball has increased. Okay. Cause number two is that as you can see the lens is converging it. Okay, very quickly. बहुत कम डिस्टेंस में लेंस जो है इसको कन्वर्ज कर रहा है. इसका मतलब है अगर ये लेंस है यहाँ से लेकर जहां तक ये कन्वर्ज कर रहा है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं. यस, पहले इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ थी, तो फोकल लेंथ जो है इसे कम हो गई है अभी के लिए. द फोकल लेंथ हैज डिक्रीज्ड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से लेंस का जो पावर है वो बढ़ गया है. ओके, यू कैन से द पावर ऑफ द लेंस हैज इंक्रीज्ड. The power of the lens has increased. Okay, देखिए पावर ऑफ द लेंस आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं एक लेंस जो है
वो कितना जल्दी या तो कन्वर्ज करेगा रेज को या तो डाइवर्ज करेगा रेज को। ओके, जितना इफेक्टिवली, जितना कम डिस्टेंस में वो कन्वर्ज करेगा रेज को या डाइवर्ज करेगा रेज को, वो उसका पावर डिफाइन करेगा, उतना वो ज्यादा पावरफुल होगा जितना कम डिस्टेंस में जो है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं दो लेंसेज बना रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज लेंस नंबर ए। ओके, और इसने जो है कन्वर्ज ऐसे किया, इस पे हमने पर्ल जो है बीम डाली। ओके, और इसने कन्वर्ज किया इतने वाले डिस्टेंस में। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने एक और लेंस लाया ऐसे, ये थोड़ा सा फ्लैटर लेंस है। ओके, इसका हमने पैरेलल बीम डाली हमने इस पे भी। ठीक है, और इसको जो है इसने कन्वर्ज किया रेज को यहाँ पे। So now it's very clear that this lens A has more power than the lens B. Okay, why? Because ये कन्वर्ज कर रहा है रेज को बहुत ही ज्यादा जल्दी। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस में इनको कन्वर्ज कर रहा है। So two possible causes done. Let's go to correction. Correction. Okay. Now you see, how do you correct this? If I tell you one thing, that ये लेंस जो है ये बहुत ज्यादा जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। ओके, जब इसको मैं पर्ल बीम ऑफ लाइट जो है यहाँ से आ रही है, पर्ल लाइट, is it easier to converge parallel beam of light or divergent beam of light? Obviously, it is easier to converge parallel beam of light. Okay, because वो parallel है, they are parallel like this. But if it is the divergent beam of light, it's gonna be difficult for them to converge. मुश्किल हो जाएगा converge करने के लिए। क्यों? Because divergent rays को आपको सबसे पहले converge parallel बनाना है, ठीक है? और parallel के बाद वो converge हो जाएंगी। ओके, सो आप एक ऐसा लेंस लगाएंगे इसमें जो कि रेज को डाइवर्ज करेगा बिफोर एंटरिंग द आई। ठीक है, रेज जो है वो आई में आने से पहले अगर डाइवर्ज हो जाए तो इस लेंस को टाइम लगेगा उसको कन्वर्ज करने में, ज्यादा डिस्टेंस लेगा कन्वर्ज करने में। ओके, और इमेज जो है वो बराबर कहाँ पे बन जाएगी, रेटिना पे। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि कितना डिफेक्ट है। किसी को ज्यादा डिफेक्ट है तो कॉनकेव लेंस का पावर भी ज्यादा होगा जो हम लगाएंगे। ओके, किसी को कम डिफेक्ट है तो कॉनकेव लेंस का जो पावर है वो कम हो जाएगा, कम वाला लेंस वाला लगाएंगे। ठीक है, so in correction what you will do is that the concave lens, the concave lens of suitable focal length यानी जितना ज्यादा डिफेक्ट है उसी के हिसाब से उसको जो है वो लेंस भी दिया जाएगा, of suitable focal length is recommended. Okay, to treat this defect. Okay, got it? So it's very easy. So in first 4 points you mentioned what is this defect all about. Then you discuss the 2 points about the causes, and at the last you said about the correction. How can we correct this? So basically आपने इसके बारे में हर कोई चीज बताई है. So this you can see over here is the myopic eye. Yeah. Why? You can see the parallel beam of light coming. Okay. Wait a second. I'll take the different color. Yeah. So this is the ray like this. These are parallel beam of light and they are being converged in front of retina. Okay. Then what you use? You use this concave lens. Yeah, concave lens is used. तो ये rays को diverge करेगा यहाँ पे ऐसे. Okay, and these divergent rays will be converged at what, retina. Got it? So the diagrams are also important when you are answering the questions like these. ऐसे nature की questions को you have to make the diagrams. Okay, now hypermetropia, whatever you wrote in the myopia, I just have to write the reverse of that in the hypermetropia. Okay, and what's that? Let us see. So in myopia, you said that it's also called the nearsightedness. So here, this will be called as the farsightedness or longsightedness. Both of these words are correct. Okay, so I'll write it. It is also known as long
long sightedness, okay, or far sightedness also, whichever the term you like. Now in myopia you were saying that the object can be seen, the objects can be seen, nearby objects can be seen clearly, but the far objects cannot be seen clearly, okay. Here it's the reverse. You can see the far objects clearly, okay, आप दूर की चीजें अच्छे से देख पाएंगे लेकिन नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं देख पाएंगे, okay. So in this defect a person in this defect a person can see far objects clearly, far objects clearly, but cannot see nearby objects clearly. अब इसमें आपने देखा होगा, you must have seen the elders at the home whenever they read something, okay, वो दूर रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस पे नहीं रखते, दूर रखते हैं, तब जाके उनको वो अच्छे से दिखता है. सो दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम विच डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ओके. तो देखिए अब ये लिख दिया आपने. द नेक्स्ट इज दैट इमेज कहाँ पे बनी. इन केस ऑफ मायोपिया द इमेज वाज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ओके. In hypermetropia the image will be formed behind the retina, okay. Image is formed behind the retina, okay, behind the retina. Got it? Next, we were discussing that which point changes, okay, is it the near point which changes or is it the far point which changes. Now clearly this person can see the far objects clearly, वो दूर की चीजें अच्छे से देख पाएगा, तो far objects थोड़ी, far point थोड़ी उसका चेंज हो जाएगा, नहीं, इसका जो है वो नियर पॉइंट चेंज हो जाएगा. जैसे कि नॉर्मल आई में नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर्स, तो लेकिन इसका 25 सेंटीमीटर्स नहीं होगा, इट विल बी ग्रेटर देन दैट, मे बी इट कैन बी 30 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स और 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर 35 सेंटीमीटर से आगे किसी का नियर पॉइंट है 35 सेंटीमीटर्स, उसका मतलब है अगर 35 सेंटीमीटर से आगे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी दैट क्लियरली, ओके. So let's write this down. The far point remains same, okay, remains same, but it is the near point which changes. But it is the, you can directly write that the near point changes, but it is the near point which changes, and obviously it will be greater than 25 centimeters, okay, and will be greater than 25 centimeters. Clear? Okay. So as I said that myopia में भी आपने 4 points लिखे wherein you described about the defect, okay, nature of the defect. Then causes, yeah. Now very simple. In causes, there were two causes in that, okay. एक तो myopia में either the eyeball size, size of the eyeball increased, okay, तो इसमें decrease हो जाएगा, okay. वहां पे जो है power of the lens जो है वो ज्यादा होता था, यहाँ पे कम हो जाएगा, बस ये लिखना है, okay. So I'll write it, size of eyeball decreased, okay, and the power of lens, yes, power of lens also decreases, isn't it? Clear? Okay. So then correction, okay, because it's not able to converge, okay. अब देखो इसको converge करने में बहुत मुश्किल हो रहा है. So in case of correction, first of all, you should be having these diagrams with you, so please make diagrams.
Yeah, there we go. So as you can see in this, it's the hypermetropic eye. Okay, hypermetropic eye, because the image is formed behind the retina. Okay, now how will you correct this? तो इसको डाइवर्जेंट रेज आ रही है और इसको कन्वर्ज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कन्वर्ज ठीक डिस्टेंस पे नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको या तो कन्वर्जेंट रेज ही दो ताकि इसको इजी हो जाए, या पैरेलल बीम ऑफ लाइट दो। ओके, so we can achieve that using the convex lens. Okay, using the convex lens. No, I think it's not coming on the screen. Wait, let me make it here. Yeah, so there is the lens. Okay, so what you use is that you use the convex lens. Okay, और इस convex lens का जो focal length है वो depend करेगा कि defect कितना है. How much is the defect? Defect ज़्यादा है तो इसका power भी आप ज़्यादा लगाओगे. Okay. Now as you can see, the rays are coming parallel, so it will be easier for this lens to converge them. और ये जो है वो उसको converge करता है बराबर कहाँ पे? Retina. Okay. So what is this eye? It is the corrected eye. Okay. Easy. Thus in correction, what you will write, that you will use the convex lens of suitable focal length to correct this. Okay. So this is the convex lens. Okay. So you will use the convex lens of suitable focal length to correct this defect. Okay. All right. So the theory part of the two defects, the myopia and hypermetropia, is complete. Okay. Then after this, we'll be solving numericals on myopia and hypermetropia. So for that, I'll make one more video, and therein we will solve some numericals on this. Okay. I hope you enjoyed the session. Okay. Enjoy and study well. Bye. Take care.